अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। The subject and specific topic of the day would be software power across the globe and software skirmishes between Iran and the West, between Islamic power and the West. We'll be discussing it in a genuine way, and we will talk about the how military pursuance and the hardware, military power and coercion has been transformed into soft power, and the developed countries are acing to invade in the developing countries through their through persuasion, through means of different sources, just like using social media campaigns, using propaganda machines, allegations against phenomenal figures in the countries, in different countries, and the changing the regime through means of public misguidance. All these things will be the subjects of our discussions today, and we'll peculiarly discuss about how America and Iran, they are using soft power, you can say, against each other to expose, to express their dominancy across the globe, and peculiarly in the Middle East. We'll be discussing it in a genuine way. And secondly, we'll be discussing that how software war is, soft power is more lethal than hard power or military invasion or military power. तो इन हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मस्त खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और आप फीडबैक दे दें कमेंट बॉक्स में, और इसको शेयर भी कर लें अपने सोशल सर्कल में। तो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, एंड द वॉरफेयर across the globe. The nature of warfare has been transformed, has been changed. Now, soft power is considered more fatal, lethal than the hard military invasion. In military invasion, we can see a physical appearance and another activities which is quite apparent. But in soft power, the skirmishes across between countries, among countries, would be abstract, and they can hit a major blow to another country's possessions, arsenals, and belongings, and important strategic locations. We saw severe cyber attacks by Russia to the Americans while their general elections were going on, and the Russian hackers hacked the White House management system. And secondly, when there's a great cyber transformation, cyber attacks between Iran and Israel, and America and Iran, all these when the Natanz power sector was hit by Israel, and then Iran reacted, and one of the Israelis reputed chemical factories were dust into the ground, and they abruptly cut fire out into the cyber attack. And how cyber attack is getting popular each passing day, and the countries in the developed countries and the developing countries equally are fear of such lethal attacks, which may likely to engulf the entire world within a short span of time. तो इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे कि ईरान और यूएसए इंगेज है सॉफ्टवेयर मिलिट्री कम्बैट में, तो किस तरह से एक्चुअली में अगर आपको इसकी जेन्युइन डेफिनेशन बताता चलूँ कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, what is soft power. So soft power एक किस्म की, it's a kind of a pursuance, it's a kind of you can say any tactic of any country to persuade another country with temptations, you can say with pursuance, giving them allurement or some sort of another aspects to accomplish their political motive. किसी भी तरह से किसी दूसरे कंट्री को लालच देकर या किसी किस्म के चीज़ में वरगला कर अपने सियासी मकासद को हासिल करने का नाम सॉफ्ट पावर कहलाता है। अब दुनिया में बहुत सारे अगर हम देखें तो सॉफ्ट पावर के जंग छिड़ गई है, खुसूसन ईरान और अमेरिका के बीच में जो सॉफ्ट पावर जो है, इसमें मेन चीज़ से ये कोयर्जन और यूज़ ऑफ फोर्स से अवॉइड किया जाता है विद इन द कंट्री। अगर ईरान के अंदर उकसाना हो तो उनके मैसेज को, उनके
अवाम को उनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है और वहाँ के अंदर एक बहुत मिकदार में पैसे खर्च किया जाता है और उनके जहन के अंदर ये चीज़ माइल किया जाता है कि आप डिग्रेड किया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट ने आपको वो हुकूक नहीं मिल रहे जो दूसरे ममालिक को मिल रहे हैं, और जो उनकी डोमिनेंट पॉलिटिकल करार से फिगर से उनके खिलाफ एक ऐसी सोच पैदा कर लेती है कि इसके अंदर उस मुल्क के अंदर हेटेड पैदा हो जाते हैं अपने ही हुक्मरानों के साथ, अपने ही फिनोमिनल लोगों, अपनी कौमियत के साथ उनके जज्बे जो नेशनल स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जो दूसरे अक़वाम की मिमिक्री करना शुरू करते हैं। दुनिया में अब ऐसा है, देयर इज़ अ ग्रेट हायरार्की अक्रॉस द globe. You can see linguistic imperialism, cultural hierarchy, and we can see the westernization is being adopted by the numerous parts of the world owing to the capitalism and strong and robust you can say social media campaigns by the West. And अगर हम देखें तो Islamophobia is on pinnacle stage owing to deliberate social media campaigns, and white supremacy is at sky high, and we can see religious fanatics across the globe. All these aspects are the use of soft media tool and to defame one country and to gain one's political motives for their own interest. और अमेरिका और इसराइल इस सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते और वो इस्लामिक जो इमेज है, ट्रूली इमेज को स्पॉइल करने के लिए मिडिल ईस्ट में घुसे और इस तरह के बहुत मुस्लिम कंट्रीज़ में वहाँ पर अनरेस्ट पैदा कर लिया और वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद उनका चेहरा एज ए इस्लामिक चेहरे के तौर पर दिखाया, जिससे दूसरे दुनिया के ममालिक तक इस्लामिक जो चेहरा था, ब्रूटलिटी जब आईएसएस शो करते थे तो वो इसको कैप्चर करके दिखाते थे। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेटली this is the face of Islam, but despite Islam is a complete code of life and gives the message of peace and tranquility, the rest of the world blindly believe the false media channels and they create uncertainty. They resulted in uncertainty, and the perception against Islam was pursued to be the radical religion, unfortunately. And the depiction of the cartoon of the Holy Prophet ﷺ we saw in France and many such blasphemous एक्टिविटीज़ क्रॉस ग्लोब। तो इस हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली अगर ईरान और यूएस की बात कर ले तो हाउ आर द मेथड्स ऑफ वॉरफेयर्स व्हिच द मॉडर्न एरा इज यूजिंग। तो आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो सॉफ्ट जंग है यहाँ पर मिलिट्री और स्कर्मिशेस के अलावा सिविल मिलिट्री सॉफ्ट पावर के मीडिया चैनल के ज़रिए किस तरह आवाम के ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा मशीन्स पे उसको यूज़ करते हैं, क्लार्क्स को पैसे देते हैं, मीडिया चैनल्स को पैसा दिए जाते हैं, दे आर लर्ड आर टेम्प्टेड गिविंग हैंडसम अमाउंट, और इस तरह से विद इन द कंट्री डिवीजन पैदा करते हैं, फिशर करते हैं, सेक्टेरियनिज्म पैदा करते हैं, और इस तरह के हरबे को कहते हैं सॉफ्ट मीडिया पावर। प्रोपेगेंडा कैंपेन्स इसमें सर्विस है, सोशल मीडिया कैंपेन, साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ तो फिनोमिनल पर्सनैलिटीज़ के ख़िलाफ़ बोलना, स्पेशली इन इस्लामोफोबिया का राइस होना। अब यूएस अमेरिका कंसीडर करते हैं अगर वो जो लिबरल अप्रोच अपनाएंगे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की फॉलो करेंगे और वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो ईरान के ऊपर एक ग्राह गुजरेगा, और ईरान के अंदर अभी जो अनरेस्ट फ्यूल करने में अमेरिका और इसराइल का काफ़ी हाथ है। दो कि ईरान इज़ वन ऑफ द लिटरेट कंट्री एंड हाईली एजुकेटेड कंट्री इन द मिडिल ईस्ट एज कम्पेयर टू द other lands. Despite being such on a pinnacle stage, America and Israel are pursuing to defame the Islamic revolution, the truly norms of Islam. Actually, if I talk about the historical background, after the revolution in Iran, there we can see America and Iran bear two contrary ideas. One is quite liberal, capitalist and aristocratic, and one is purely Islamic and truly following the Islamic norms. तो अमेरिका नहीं चाहते कि वहाँ पर इस्लामी इनकलाब इनकलकेट हो। जो उनका पॉपिट रज़ा शाह पहलवी को बिठाया था, उनकी कुछ वाक़यात वहाँ पर मौजूद है, रेमेंट्स उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं ताकि इस्लामी इमेज वहाँ से खराब हो। इस्लाम और वहाँ ईरान रिएक्ट कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स पे ईरान चाहते हैं कि वो इस्लामिक कल्चर की बढ़ोतरी हो, इसलिए वो भी काफ़ी मीडिया चैनल्स को फ्यूल करते हैं, कैंपेन करते हैं। कोई भी मुल्क चाहता है कि अपने आइडेंटिटी, अपनी साख
बरकरार हो। अब ईरान अमेरिका के मुकाबले में सॉफ्ट पावर के तौर पर ईरान जो यूज़ कर रहे हैं इनएक्सट्रिकेबली, तो जो इज़ द सॉफ्ट पावर इन ईरान इज़ लेड बाय सुप्रीम लीडर सईद आयतुल्लाह सईद अली खामनाई। और यू कैन से उसमें ईरान परस्यू कर दे तो अपने अलाइंसेस को मिडिल ईस्ट में अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हासिल करने के लिए एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और जो ईरान मीडिया चैनल यूज़ करते हैं इसमें कल्चरल एस्पेक्ट के हवाले से, चैरिटी के हवाले से, और यूनिवर्सल जो अपील है, और बहुत सारे ज़ैली तंजीमें हैं, इनके थ्रू ईरान अपनी इन्फ्लुएंस हासिल करने में अब तक कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कामयाब भी रहा है। और अगर हम बात करें सहारा टीवी, कौसर टीवी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ प्रेस टीवी, हिस्पान टीवी, ऑल दीज आर glaring example of Iranian pursuance against the Western media channels which are owned by their establishment or their military power to pursue their motives and goal. And अगर आप फोकियामा की बुक पर द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड एस.पी. हंटिंगटन ने बुक लिखा है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट फोकियामा स्टांस ऑफ अमेरिकन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इन दिस S.P. Huntington has vividly lamented the Western aggression and capitalist structure across the globe, and his S.P. Huntington is of the view that there's a great clashes among the civilization, and the major conflict is between Islam and Christianity, and the West is trying its level best to overwhelm all its power, to overwhelm all the major religions, and using its capitalist structure, invading in numerous countries, and it's going to be very crucial for in upcoming year as well. तो इस तरह से सॉफ्ट पावर की जंग है दुनिया में, अनसर्टेनिटी की कैफियत है, ये बहुत लीथल है, जिससे मुल्कों के जो विद इन द कंट्री एक फिशर पैदा कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी मुजाहरे, धरने, इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, जो ट्रूली जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ अगर हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे कंट्री को सॉफ्ट मीन्स ऑफ पावर, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, डिसइंफॉर्मेशन देना और आवाम को उकसाना, such kind of disinformation peculiarly by the West in the Muslim countries. We can see the destruction of Syria, Libya, Iraq, Palestine. All these are glaring example of the Western, soft power. They use soft power to overthrow all these regimes. Right now we can see there's a great protest in Iran owing to the deliberate conspiracy of America and Israel, but Iran is using responding in a gigantic way, and Iran has spoiled all those conspiracies fueled by America and the West. Now it's going to be transferred into a decisive era, और काफ़ी एडवांस हो चुकी है वो कंट्री जो कि अपने मिलिट्री आर्सेनल्स के हवाले से परसुएंस कर रहे थे सॉफ्ट पावर के हवाले से। पहले रिजिड कुछ मीडिया चैनल्स अब दुनिया में बल्क ऑफ मीडिया चैनल्स आए हैं, तो आने वाला दौर काफ़ी खतरनाक महलिक साबित हो सकते हैं अगर कोई भी कंट्री अपने सॉफ्ट पावर को इन्हांस नहीं करते हैं। और पाकिस्तान की अगर कॉन्टेक्ट में बात करें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अपने साइबर जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इस हवाले से काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस हवाले से, ताकि हम तमाम दुश्मन के जो सॉफ्ट और हार्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस से बच कर आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विथ यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह।